Hello students, I hope you all are fit and fine and must be studying at home. So here I am, Aisha Khan, again back with the crash course that I told you earlier only with Motion Private Education Limited. So students, as you know that we will be starting, or we have started rather, with the crash course of your English portion as well. So in that we people are covering up all the topics quickly, and we are covering them up in a flow. So up till now what we have done, let me just give it to you in a briefing, that we people have up till now covered one chapter from First Flight book, that was A Letter to God. Then we people have covered the two poems after first chapter which has been given in your First Flight book, that was Dust of Snow and Fire and Ice. Both have been written by Robert Frost. तो अभी तक तो क्या था, लिटरेचर पोर्शन वी हैव बीन डूइंग द प्रोज एंड द पोएट्रीज एंड एवरीथिंग. बट व्हाट अबाउट द ग्रामर पार्ट? वी पीपल हैव अप टिल नाउ नॉट इवन स्टार्टेड विद द ग्रामर पार्ट. सो today I have come up with a topic that is grammar, and basically it forms the root of English language. If you talk about English grammar, then this topic forms the very root of English language, that is your tenses. टेंसेज, जब भी हम लोग नाम सुनते हैं बाय द नेम्स ओनली वी गेट अफ्रेड कि टेंसेज है यार, ये तो बहुत डिटेल्ड होगा, दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट एंड वी विल कीप इट फॉर द लास्ट टू प्रैक्टिस. एंड देन व्हाट हैपेंस, वी पीपल जस्ट स्किप ऑफ दिस टॉपिक. वी डोंट इवन स्टडी, वी डोंट इवन बॉदर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो आई हैव कम अप in between only so that you can just touch all the topics from literature, from your grammar, from your poetry, everything. So we'll be doing them simultaneously, and in order to complete all the topics very quickly, I have taken one topic separately for tenses part. बाकी सारी चीजों को तो we'll still merge, but this topic needs proper attention and only full concentration on this. So let me just start off with tenses today. So tenses, today's topic is tenses, and this is your grammar portion obviously. So I have started with the tenses part. Now see, before starting or before explanation of these things, let me just tell you students कि you people have studied tenses in your lower classes as well. सब लोगों ने पढ़ा होगा tenses, but you don't pay attention. You don't pay attention to the understanding of all the tenses. So in English language, if you talk about tenses, then tenses basically deals with verbs. All the verbs it deals with, it only focuses on the verb. Time of action, when it takes place, everything it takes place or it takes into account. तो tenses जो है, it is only and mainly concerned with the verbs. At what time the action has been completed, at what time the action started, so on and so forth. So basically tenses deals with verbs. And in English language we people have three majorly tenses, that is the past tense, something which has already been covered already. So action started in the past and it was completed in the past. If you talk about present tense, something which is happening now. As of now, whatever is happening at present, it is all accounted to simple or present tense. ठीक है, अभी तो simple continuous पे नहीं जाते हैं, just understand the tenses. Then if you talk about some later course of action, further course of action which will happen in later course of action or which will happen in future, that all comes under the category of future tense. So three tenses have been there, past, present and future. अब if you go by the further classification, then further classification has simple tenses. In all the tenses, past maybe you have simple tenses. If you talk about the progressive or the continuous tenses, all the three tenses have been there. Then if you talk about the perfect tenses, है ना, perfect tenses are also there in all the three tenses. And if you talk about perfect continuous tenses, so these three tenses are also included under this. तो मतलब further division देखो इसका कैसे हो गया है. So students, if you talk about the three classification of these tenses, then you have, let me just show it to you. See, tenses, you have three basic tenses here. Past tense, present tense and future tense. ये तो तीन major categories हो गई इसकी. Past, present and future.
three tenses have been there. If you talk about the further classification or further subdivision of these tenses, students, then you have simple tenses, then you have continuous tenses, after this you have the perfect tenses, and in the later course of action you are having perfect continuous. ठीक है, तो ये तो पूरा फर्दर सब डिविजन हो गया. यू हैव बेसिकली मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इफ यू टॉक अबाउट द फर्दर क्लासिफिकेशन और फर्दर सब डिविजन ऑफ दीज टेंसेस, देन यू हैव सिंपल टेंसेस इन ऑल द थ्री, देन यू हैव कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड perfect continuous. So in this video we'll be covering out all the tenses simultaneously with examples and with the whole format of all the tenses. So let's get started with that, students. Now we'll be starting with very simple tenses first. पहले सारे simple tenses cover करेंगे, then we'll go about continuous, then we'll go about further perfect tenses and perfect continuous. तो simple tenses means what, students? Simple past, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बिल्कुल इजी चीज ले ली, सिंपल टेंसेस. ओके, अब सिंपल टेंस मीन्स व्हाट? पास्ट टेंस. इफ इट टॉक्स अबाउट पास्ट टेंस, समथिंग और सम एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विच हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, सो दैट इज ऑल अबाउट योर पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड इंग्लिश. I studied English मतलब I have already studied English. पढ़ चुकी हूँ मैं. Okay, action started in the past and it was completed in the past means it is talking about simple past tense. Now how we came to know कि this has been completed? By this word IED. If you are having this IED word in the sentence, then it talks about completed action in the past. ठीक, तो studied English means मैंने पढ़ ली. This is all about your past tense. Now further, if you talk about the simple present tense या present tense ले लो सबसे पहले, तो I study English means what happens? We are studying English now also. हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ते हैं. Okay, तो study means it is talking about at present. Alright. Now later, if you talk about future tense, future मतलब कुछ चीज बाद में होगी. Okay, तो I will study English. Alright. तो with these verb, इसमें और कुछ चेंज हमने नहीं देखा. देखो, I is there in all the sentences. If you talk about English, English is also there in all the sentences. But what has been changed is the verb. Verb यहाँ पे हो गया था studied. ठीक है, here it was study and here will study. तो चेंज कहाँ पे हुआ है? ओनली इन द वर्ब फॉर्म्स. तो टेंसेस बेसिकली डील्स विद द वर्ब फॉर्म्स ओनली. यहाँ पे सब चीजें एज इट इज है, ओनली द वर्ब हैज बीन चेंज. तो यू हैव सीन स्टूडेंट्स की टेंसेस डील्स विद द वर्ब्स. तो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टेंस, द वर्ब हैज बीन चेंज. इफ इट इज पास्ट टेंस, IED हो जाएगा, ED हो जाएगा, D हो जाएगा. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो इट विल बी द सेम. If you talk about future tense, then it will be added will or shall. So this is all about your verb tenses in English. So now see further classification. अब simple tenses को देखते हैं एक बार. ठीक है. So I have made the whole format also. As you can see, it's looking very attractive and it's very easy to understand as well. So simple present tense पहले हम लोग देखेंगे. Simple present tense में how many types of sentences can be framed? Either it will be positive sentence, either it will be negative, or either it will be question. अब present tense की ही बात नहीं करें हम और सारे tenses की बात करें, then also you can have three types of sentences. Either it will be question form, either it will be positive form, or either it will be negative form. तो तीनों sentences के तीनों forms हम एक एक बार study कर लेते हैं. If you talk about simple present tense in positive form, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देन व्हाट टाइप ऑफ वर्ब यू विल बी यूजिंग? फॉर एग्जांपल, आई, ही, शी, दे, यू, वी, ये ले लिए हम लोगों ने सब्जेक्ट. एनी सब्जेक्ट इफ वी हैव टेकन, लेट्स से एग्जांपल आई या वी और ही, तो ही इज अ सिंगुलर नाउन स्टूडेंट्स. तो विद सिंगुलर नाउन यू विल बी यूजिंग द वर्ड विच इज एंडिंग विद एस or es. This thing you have to keep in mind that with all the singular tenses or with all the singular subjects, you will be using the verb which is ending with
s or es in simple present tense. This you have to keep in mind. This is very very important students, क्योंकि क्या होता है, if it is ending with s or es, then you will have it in your mind कि यार s और es से end हो रहा है, means this must be plural. But there is a, you can say, exception to this rule. In simple present tense we use the s or es वाला word with the singular subjects and not with the plural subjects. So he starts. If you will be using the verb here, then you will say he starts. And if you will be using the plural form, that is you or we, तो they start. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है कि s और es हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, एंड विदाउट s वाला वर्ड विल यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो s और es हम लोग यूज करेंगे विद सिंगुलर. अभी many more examples you can study, but I'm just telling you the main format of the whole tenses part. तो singular के साथ you will use the word s or es, with plural subjects you will use without s. ठीक, तो all any subject if you take I, he, she, they, you, we, then singular है तो starts and plural है तो start. This is all about your positive form. Now let's take it example of negative form as well. सब्जेक्ट्स देखो सारे सब में वही है, आई, ही, शी, यू, वी, दे, आई, ही, शी, यू, वी, दे, सब चीजें वही है. अब चेंज क्या हुआ, नेगेटिव है, मतलब कुछ चीज नेगेटिव में आ जाएगी, या नॉट या कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, मींस डज नॉट, डजंट, ये ऐड ऑन हो जाएगा, या फिर डू नॉट ऐड ऑन हो जाएगा, या डोंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चेंजेस कहाँ पे हुए, ओनली इन नेगेटिव पार्ट. So see, only thing has been added in negative sentences is your does not or don't or doesn't. ये चीज ऐड हुई है हमारी. नेगेटिव सेंटेंस है तो he does not start, she does not start, they don't start. With singular subjects you will use does, and with plural subjects you will use do, don't. Alright, तो does यूज हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. यही चीज है इंपॉर्टेंट, बाकी टेंसेस सब लोग पढ़ते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स यू विल यूज डज, डज नॉट, ये लिखे नेगेटिव में, चलो ये लिख लेते हैं, डज नॉट. इफ यू टॉक अबाउट डू नॉट, देन डू नॉट इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो दिस इज द ओनली चेंज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म. He does not start, she does not start, they don't start, anything. नेगेटिव में मतलब कुछ चीज नो या नॉट वाली आ जाएगी, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम. They don't start, he don't start. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट s नहीं आ रहा है. ठीक है, why? Because you have already used contraction does not or don't. तो with negative sentence you will not use s or es. Only in simple present tense positive form you will use the word which is ending with s or es. ये चीज ध्यान में रखना है. ठीक है, in the rest of the sentence it remains the same. s और es हमें ऐड नहीं करना है. Now if you talk about the question form of what? Simple present tense. The question form of simple present tense, how it will start? Either it will start with does or either it will start with do. Does will start with singular and do will start with plural. तो does he start, does she start, does they start, no, do they start. तो एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं हम. does he start, क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यूज कर लिया. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इफ यू टॉक अबाउट दे, तो डू इज यूज विद प्लूरल, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड डू दे स्टार्ट. ये मेन जो लूप होल्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पे ही तुम लोग मिस्टेक करते हो. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज पॉइंट्स. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इज क्लियर टू यू ऑल ऑल्सो, सो दैट you can just go through the exercises, but these are the places where you people make mistakes or maximum of the students makes mistake. तो यहाँ पे हम लोगों को अपना कैच होल्ड कर लेना है कि हाँ ये मिस्टेक्स हम लोग कवर करते हैं, and these mistakes have to be rectified. Now this is all about your simple present tense. If you talk about simple past tense, तो see simple past tense students वापस वही है, पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम होगा, नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम होगा, क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम होगा. ठीक,
सब्जेक्ट हमारा हो सकता है आई, यू, ही, शी, वी, इट, दे, ये चीज तो तुम लोग देख लो, सब्जेक्ट तो यही होगा बेसिकली. ओके, देन अगेन इन नेगेटिव सेंटेंसेस आल्सो यू आर हैविंग द सेम, इन द क्वेश्चन फॉर्म आल्सो यू आर हैविंग द सेम. अब चीज चेंज कहाँ पर हो गई है? सी इन एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हमारे हो सकते हैं आई, यू, ही, शी, वी, इट, दे, एनीथिंग. बट हियर व्हाट हैज बीन चेंज, वहां हम लोग यूज कर रहे थे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. बट हियर in simple past tense students you will be using verbs second form, that is start, started, play, played, rain, rained. ed वाला फॉर्म जो होगा वो हम इसमें V2 वाले फॉर्म में यूज करेंगे. This is the verbs second form. If you understand the second form of the verb, then you can easily go about applying it in the positive form in simple past tense. For example, I liked it. अब like it नहीं होगा, like it किस में हो जाएगा? Simple past. But if you are using ed or d, I liked it, then it will be as simple past tense. I guess you people have understood this very properly. Now, negative form. कुछ भी चीज चेंज नहीं करना है हम लोगों को. क्या करना है? सब्जेक्ट है, did not you will use, verb का first form you will use. Here you are using verb का second form, but here you will be using verb का first form. अब why? See an example. I did not like it, है ना. एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया. This is the subject. Add on क्या कर दिया? Did not. अब did not हमने did already past form use कर लिया है, तो हम ये वाला verb change नहीं करेंगे. Again I am repeating कि if you have used the word did always accounts for past tense. did use कर लिया है मतलब हाँ past में ही हुई है, सब्जेक्ट past में ही एक्शन हुआ है. तो did अगर यूज कर लिया है तो हम फिर verb का ये वाला फॉर्म चेंज नहीं करेंगे. You will keep it as it is and it will be in present tense only, या verb का first form ही रहेगा. Like here you will not say I did not liked it, that will be wrong. देखो क्या करते हैं हम लोग, I did not, अब did not already past में है, फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं, you will write liked it. तो दिस इज द प्रॉब्लम वेयर स्टूडेंट्स गो रॉन्ग. ये liked नहीं होगा, दो हम past form यूज नहीं करेंगे. इफ यू आर यूजिंग did not, then you don't have to use ed form in the verb. तो I did not liked it is wrong. I did not like it, that is correct. ठीक है, तो pay attention on this part. I am identifying or I am pointing out to the mistakes where you people go wrong. Rest of the topic you can understand it from your book as well. Alright students, so don't write liked it, it will be like it. I did not like it, she did not like it, they did not like it. किसी के भी साथ आप यूज करोगे, you will use did not and verb का first form. Alright, this is all about your negative form. Now, let me just cover up the question form as well. तो see, the question is starting, तो did ही यूज करेंगे. Did they start, did I start, did you start, did she start, anything. तो did you like it. Again here you will not use ed form of the verb, you will simply use the first form of the verb. That's why I am telling you, और I paid emphasis कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, verb का second form, but here you are using verb का first form, and in question form also you will be using verb का first form. Alright, so I guess I have made myself very clear to you all regarding the simple past tense. Now let's move on to simple future tense students. तो simple future tense again positive, negative and question mark. पहले इसको understand कर लो अच्छे से. तो simple future tense, simple past tense, simple future positive, simple future negative and simple future question. अब देखो इसमें क्या change हो रहा है. Subject, subject, subject सब में है. Change क्या हुआ? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल शैल. वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ वी पीपल यूज विल ओनली. शैल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस पार्ट, सो यू कैन यूज विल फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट्स. तो विल और शैल, बट सब्जेक्ट्स विल और शैल एंड देन वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. That is very very easy. I will go to Thailand. Simply it is telling about the future course of action and how it has been denoted will. It is telling you कि something will happen in future. Simple enough. अब देखो नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा, will not हो जाएगा या won't हो जाएगा. Basically this won't is the
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट ओनली, तो या तो हम लोग विल नॉट यूज कर देंगे या फिर वोंट यूज कर देंगे. आई विल नॉट गो टू थाईलैंड या आई वोंट गो टू थाईलैंड, बोथ द वेज इट इज करेक्ट. तो हियर इन प्लेस ऑफ विल नॉट यू कैन यूज वोंट ऑल्सो. वोंट इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ दिस विल नॉट. हम लोगों ने क्या किया, ये आई डबल एल हटा के यू हैव सिंपली यूज्ड ONT, दैट इज वोंट. So both the ways it will be correct. I won't go to Thailand. I will not go to Thailand. Both are denoting the future course of action. Alright. Now, if you talk about the question form, will they start? Will they go? Will you go to Thailand? Anything. But the question form will start with will and it will end with a question mark. Verb का first form ले लेंगे हम लोग. Will you go to Thailand? That is all about your simple future टेंस. ये तो सारी बात हो गई स्टूडेंट सिंपल टेंसेस की, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम कंटिन्यूअस टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस. तो सारे साइमल्टेनियसली विल बी स्टडिंग. फर्स्ट विल टेक अप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन पास्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस. ऑलराइट. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सम एक्शन इट स्टार्टेड and it is still continuing for some point of time. That is all about present continuous tense. Now there is a sentence also. Present continuous tense is used to describe an action that is going on in the present, something which is happening now. For example, I am teaching you tenses. You are learning tenses. So these things are ongoing and it is happening now. Alright. You are sitting at your home and you are studying. Anything which has been started and which is still continuing or which is at the happening of an event. So that is all about your present continuous tenses. Present continuous समझ में आ गया. continuous क्यों है, क्योंकि action अभी भी चल रही है. Okay. Now if you talk about positive sentence, negative sentence and the question form, तो positive में देखो subject इसके साथ हम लोग यूज करेंगे is, am और are. These will be your helping verb in present continuous tenses. Now you will be using verb का first form and ing. ing will denote something which is happening now. ठीक है. For example देखो subject हो गया he, then with he you will be using is, then verb का first form that is play. But with play you have used ing, playing and football. So she or he is playing football. She is dancing. They are running. Whatever. So anything which is showing this thing. Subject is, am or are. Then verb का first form plus ing. So that will be your present continuous tense in positive form. Alright. Now नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा सिंपली. बस एक यही चीज चेंज हो रही है इसमें. देखो सब्जेक्ट है हमारा ही के साथ इज यूज कर लिया, नो नॉट नेगेटिव फॉर्म के लिए. देन अगेन वर्ब एंड ing. तो प्लेइंग फुटबॉल सिंपली इज जस्टिफाइंग द होल फॉर्मेट और नॉट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन नेगेटिव फॉर्म. नाउ if you talk about question form students in present continuous tense, then it will start with these verbs is, am, are. Is he playing, are they going, is she dancing, all these things. So is, am, are आ गया. is, then again you are having subject he, verb and ing form, playing, कुछ भी चीज अगर आ गया एंड क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन का फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ही है हमें. तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज शी प्लेइंग डांसिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल बी included under the category of present continuous tense. So this is all about your present continuous tense. I guess यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा. Now let's discuss some past continuous tenses. Past continuous tenses used to denote some action which started in the past and it continued for some time and then it got stopped. मतलब कुछ एक्शन पहले से स्टार्ट हो गई थी, it continued for some time and then it got stopped. That is all about your past continuous tense. ठीक है, कुछ चीज चली मतलब कुछ टाइम तक कंटिन्यू रही और उसके बाद कोई एक्शन स्टॉप हुई. That is all about your past continuous. अब देखो सेंटेंस. Past continuous tense expresses the action or task that we are ongoing in the past
ongoing थी कुछ टाइम के लिए, it was continued in the past and we cannot determine when the action has been completed or when the action was started. अब ये चीज हम लोगों को स्टूडेंट्स पता नहीं होती है कि एक्शन जो है where it was started, when it was started and when it was finished. But हाँ, ये पता होता है हम लोगों को कि action started and it continued for some time, that is sure. But we do not know the exact point of time where the action when the action started and at what time the action got stopped. For example, देखो positive negative question mark इसी सब में होगी. These three types of sentences can be framed. अब देखो past tense in positive form, subject ले लिया. With past continuous tense you will always use was and were, then verb first form and ing. मतलब he was traveling to Venice. अब वो कब ट्रैवल कर रहा था और उसने कब खत्म कर दी अपनी ट्रैवलिंग, ये हमें नहीं पता है. बट ये चीज पता है कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूड ओवर सम पॉइंट ऑफ टाइम. ही वाज ट्रैवलिंग टू वेनिस. दैट इज ऑल अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, he was not traveling to Venice. Simply add on क्या कर देना है हम लोगों को, not. Was and were will be your helping verb in past continuous tense. तो helping verb का अच्छे से ध्यान रखना है. In present continuous we have studied is, am and are. यही तीन helping verb रहेंगे with present continuous tenses. If you talk about past continuous tenses, was and were will be your helping verbs. अब उसके साथ आपको कैसे modify करना है verb को, that you people have already seen. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही जाएगा इसमें एंड इट विल बी विद ing. ing is a must with continuous tenses. Okay, now he was not traveling to Venice, then was and were will come in first place because in the question form these two verbs comes at first place. So was he traveling to Venice, was she going to Goa, anything. तो was से start होगा and it will end with question mark. This is very very important. यहाँ पे हम लोगों को फुल स्टॉप पुट करना है एंड हियर यू विल बी पुटिंग ऑन द क्वेश्चन मार्क. So that was all about your past continuous tenses, students. I hope I am making myself very clear to you all regarding all the types of tenses, and we are covering them specifically so that you will have a clear idea about all the tenses. All right. Now, past continuous is also been done. Let's discuss about future continuous tenses. A future continuous means some action it will start in future. Future में ही start होगी. It will continue for some time and then it will stop. Again, the time of action when it will stop, that will not be given to us. Only thing which will be clear to us will be that the action will start in future and it will continue for some time in future. For example, this expresses the action that will be ongoing at some time in the future. Future में ही start होगी, future में ही end होगा. But कब होगा, that is not known to us. पॉजिटिव सेंटेंस देखो इसका जल्दी से, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं और फिर क्वेश्चन फॉर्म देखते हैं. तो सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज क्या करेंगे, विल बी. विल बी यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल एंड बी. यहाँ शैल वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज वी हार्डली यूज शैल विद द फ्यूचर टेंस. वी मोस्टली यूज विल नाउडेज. सो विल be the helping verb in your future continuous tenses. और will के साथ एक word और add हो जाएगा, that will be be. Okay. She will be going to London tomorrow. He will be going to London tomorrow. It will be raining tomorrow. Anything. So see, subject, any subject, will be. It will be. Verb first form storm, ing, storming tomorrow. How we are coming to know the action has been, it will be happening in future with the word tomorrow. It will be storming tomorrow मतलब होगी. Okay, this is the word where we can say कि this action will happen in future. It will be storming tomorrow. Okay, now it will not be storming tomorrow will be your negative sentence in future continuous. Will it be storming tomorrow, that is a question form and it will be under the category of what, future continuous tenses. So I guess these three are examples are clear to you all about the continuous tenses. Some action will start in future, it will continue for some time and we do not know the exact point of time at what time the action will be completed. That is all about your future continuous tenses, students. Now, simple tenses have been covered, no doubt.
Continuous tenses have been covered, no doubt. Now let's discuss about some perfect tenses. What are perfect tenses? We'll be covering them simultaneously only. Present perfect, past perfect, future perfect. तो present perfect tense. Perfect मतलब कुछ भी चीज which is happening at 100%. Okay. Perfect मतलब हम लोगों ने ले लिया 100. मतलब हो रही ही है, श्योर शॉर्ट, कंप्लीट हो गई है, ठीक है. विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेट मी जस्ट टेल यू, सब्जेक्ट क्या होंगे हमारे, आई यू दे वी, एनीथिंग. ही शी इट हमारे हो गए सिंगुलर और ये सारे हो गए हमारे प्लूरल. विद आई यू दे एंड वी यू विल बी हैविंग हैव. ओके, अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज कर लेंगे हैज. शी हैज डन, he has done, they have gone, anything. अब यहाँ चेंज क्या हो गया, मेन वर्ब क्या होगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, गो, वेंट, गॉन, गॉन वाला जो वर्ब है. ओके, रन, रैन, रन, बिगिन, बिगैन, बिगन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोव. ओके, तो ये सारे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस, क्योंकि इसमें एक्शन परफेक्टली कंप्लीट हो रही है. कोई सी भी हमें ये नहीं है कि कुछ एक्शन स्टार्ट हुई, कब कंप्लीट हुई या कब कुछ टाइम तक कंटिन्यू रही. नो, द एक्शन स्टार्टेड एंड इट इज कंप्लीटेड, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, दैट इज परफेक्ट टेंसेस. अब प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, फ्यूचर टेंस कैसे होगा, लेट्स हैव एन एग्जांपल टुवर्ड्स फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, आई हैव डिसाइडेड मतलब मैंने 100% डिसाइड कर लिया है कि आई हैव डिसाइडेड टू अपीयर फॉर द एग्जाम, या शी हैज डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली मतलब उसने परफेक्टली डिसाइड कर लिया है कि शी विल गो टू दिल्ली. ओके, मतलब 100% या perfectly the thing will happen. That is all about your present perfect tenses students. देखो, she has chosen English as a main subject. मतलब उसने perfectly इस चीज को decide कर लिया है या choose कर लिया है कि उसका जो subject है, main subject है, that will be English or science or maths, anything. Then they have finished their work. मतलब उनका वर्क जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो गया है. दे हैव लॉस्ट द मैच मतलब कंप्लीटली दे हैव लॉस्ट. कुछ भी चीज इसमें ये नहीं है कि कुछ चांसेस आर देयर दैट द एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड परफेक्टली, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, वेदर इट इज एनीथिंग. ओके, so this is the main speciality about perfect tenses, that the action has been completed perfectly. And the helping verbs which will be used with present perfect tense will be has or have. Has will go with singular subjects and have will go with the plural subjects. And verb ka third form you will be using with the present perfect tenses. This thing has to be kept in mind. This is important. Alright, ये सारे verb के third forms हैं. This is important. Decided, finished, lost, chosen, gone, anything, begun, run, these are all the verbs third form. Now you have to understand the past participle form of the maximum verbs. जितना हम लोग कर सकते हैं जो helping verbs से commonly use होते हैं, that you can easily have a look at all the verbs third form and then you can easily go about applying them in present perfect tenses. So I hope I have made myself very clear to you all about the perfect tenses, that is the present perfect tense. Now let's discuss about some past perfect tenses. Past perfect tenses देखो students, with past perfect tense the helping verb which will be used will be had. Had हम लोग use करेंगे with past perfect tenses. Now see how. She had finished the test मतलब एक्शन जो है या कोई सा भी काम जो था वो पूरा कंप्लीटली फिनिश हो गया था. वहां पे हमने क्या स्टडी किया था इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि एक्शन हैज स्टार्टेड एंड इट हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, तो पास्ट में भी कुछ एक्शन स्टार्ट हुई एंड इट वाज कंप्लीटली फिनिश्ड, दैट विल बी योर पास्ट परफेक्ट टेंसेस. अब पास्ट परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने क्या ले लिया, हैड.
देन अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही चलेगा परफेक्ट टेंसेस में, परफेक्ट एंड पार्टिसिपल, ये चीज ध्यान में रख लेना, पी है ना, परफेक्ट है तो पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक। तो शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, दिस इज वन एग्जांपल रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने क्या यूज कर लिया, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव फॉर्म, और यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म ले लो, तो पॉजिटिव फॉर्म में शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, मतलब एग्जाम दिया था या टेस्ट दिया था और पूरा कंप्लीट कर लिया, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट। नाउ हियर शी हैड कंप्लीटली नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, मतलब दिया ही नहीं उसने या फिनिश ही नहीं किया, तो दैट इज ऑल अबाउट योर पास्ट परफेक्ट इन नेगेटिव फॉर्म। इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन फॉर्म, हैड शी फिनिश्ड द टेस्ट, तो हैड will be at present, then she finished the test and question mark. So this is all about your question form in perfect tenses, past perfect tenses. All right, subject had will be your helping verb in past perfect tense, then past participle form या verb का third form. In all the perfect tenses you will be using the participle form of the verb, that is verb's third form. So she had finished the test, positive sentence. She had not finished the test, negative sentence. If you talk about question form, had she finished the test. Same example in all the three forms. So this is all about your past perfect tenses. Now let's discuss about the future perfect tense also, students. Future perfect tense is used to express the action that will be completed in future at some time. फ्यूचर में स्टार्ट होगी कुछ एक्शन एंड इट विल कंप्लीट इन फ्यूचर, ऑब्वियस है, फ्यूचर में स्टार्ट हो रही है तो फ्यूचर में ही कंप्लीट होगी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन देख लो एक बार, हेल्पिंग वर्ब सारे वही है, बट हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोगों ने क्या ऐड ऑन कर दिया है, हैव या नॉट हैव, सिंपली हैव। देखो, आई विल हैव टेकन द एग्जाम, मतलब मैंने ये एग्जाम ले लिया होगा, perfectly I will have taken the exam, ठीक है। If you talk about future perfect tense in negative form, I will have not taken the exam, I will have not taken the exam, मतलब मैंने ये एग्जाम नहीं लिया होगा, होगा मतलब फ्यूचर में, और मैं नहीं करूँगा या नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, that will all be included under future perfect tense, students, okay। Try to understand it very properly. Some action will start in future, it will complete in future obviously, and it will continue and it will be completed 100% at future, okay। So that is all about your future perfect tenses. Now if you talk about the question form, then will I have taken the exam, you are asking a question in future कि will I have taken an exam, so this is all about your future perfect tenses in question form. तो तीनों चीजें हम लोगों ने देख ली पॉजिटिव सेंटेंस में, आई विल हैव टेकन द एग्जाम, आई विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम, नेगेटिव विल आई हैव टेकन द एग्जाम, क्वेश्चन फॉर्म। So this is all about your future perfect tenses. Now with this we people have covered about all the perfect tenses, simple tenses, continuous tenses, perfect tenses. If you talk about the last classification of these three tenses, then you will be having perfect continuous टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, कुछ चीज स्टार्ट होगी, इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन इट विल फिनिश फॉर श्योर, so that will be your perfect continuous tenses. Now how it will change according to the type of tenses, let's have a look. तो present perfect continuous tense, हम लोग सारे प्रेजेंट टेंसेस पहले पढ़े हैं, तो आई विल बी कवरिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट। नाउ सी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और टास्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट। क्या हुआ इसका मतलब स्टूडेंट्स, देखो, समथिंग विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, मतलब एक्शन स्टार्ट तो पहले से हो गई थी, okay, that is only it is continuous and it is perfectly going on,
perfectly going on मतलब started in the past and it continues at present. For example, so example से समझो, subject has or have will be your helping verb, has and have will be your helping verb, verb का participle form. देखो perfect tenses है तो participle form या verb का third form ही जाएगा, ठीक है. तो subject has or have verb का third form, तो he has written an essay. अब इसमें कैसे हमें पता लग रहा है कि present perfect continuous tense कैसे होगा. He has written, perfectly he has done something, so that will be your present perfect continuous tense. If you talk about negative sentence, he has not written the essay. Not written, has, not and verb का third form, written an essay. Now has he written an essay, that will be your present perfect continuous form in question form. Okay, I hope this thing has been clear to you. Something which has been started in the past and it is still going on in the present. That is your present perfect continuous tense. Now let's have a look towards past perfect continuous tense. तीनों forms हैं, positive है, negative है and question form is there. तो देखो helping verb क्या आ गया, had not, had. ये चीज तो समझ में आ गई. वहां पे प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब्स थे, हैज और हैव. ओके, एंड हियर यू विल बी यूजिंग हैड और हैड नॉट. नाउ बीन विल बी एडेड हियर. वहां पे हमने बी यूज किया था. नाउ हियर यू विल बी यूजिंग बीन. अब बीन वो वाला बीन नहीं है जो बीइंग ह्यूमन वाला होता है ना, जो सलमान खान का है बीइंग ह्यूमन. दैट इज डिफरेंट. दैट इज दिस. ये बीइंग नहीं लगाना है, यू हैव टू यूज बीन. तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग. ओके, तो बीइंग नहीं है, दैट इज बीन. नाउ दे सब्जेक्ट ले लिया हम लोगों ने, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस, मतलब वो खेल रहे थे कंटिन्यूअसली. दे हैड बीन प्लेइंग. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब हैड बीन, and playing something which is happening now. So they had been playing tennis. This is all about your past continuous tenses. वो खेले ही जा रहे थे, ठीक है. खेले जा रहे थे मतलब पहले खेल रहे थे और कंटिन्यूअसली खेल रहे थे. तो they had been playing tennis. For 2 hours लिख दो, for 3 hours कर दो, कुछ भी कर दो कि एक फिक्स टाइम के लिए वो खेल रहे थे. तो they had been playing tennis for 3 hours. This is showing a definite point of time कि 3 घंटे से वो लगातार खेले जा रहे थे. This is past perfect continuous tense, students. Now if you talk about negative sentence, that means she had not been playing tennis. वो खेल ही नहीं रही थी. तो she had not been playing tennis. This is all about your negative sentence in past perfect continuous tense. Now if you talk about question form, had they been playing tennis, had they been playing tennis. तो been uses with the word had, subject is they and verb ing form and tennis. So had they been playing tennis, it is showing clearly that this has been written in past perfect continuous tense in question form. Question form last में आ गया, question mark आ गया. That means some action has been started in the past and it continued over a period of time. Okay, that is all about your past perfect continuous tenses, students. Now let's discuss about some future perfect continuous tenses also. ठीक है, तो future perfect continuous tenses. Future perfect में क्या होगा students? Simple है, will. Subject सब में है. हेल्पिंग वर्ब हैड ऑन क्या हो गया, हैव बीन. पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में सब में चीजें एक साथ एक जैसी हो गई. अब देखो, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, मतलब मैं अगले 3 महीने के बाद वेजिटेबल्स खा रहा होऊंगा. कंप्लीट होगी एक्शन, 3 महीने दे दिया. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है. देखो परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी गिवन टू यू कि दिस थिंग विल हैपन फॉर 3 days, 4 days, 4 months, ईयर, एनीथिंग. बट
confirm time दे रखा होगा, that only will be your perfect tenses. And with perfect tenses you will be having ing form, that will be perfect continuous tenses. I will have been eating vegetables for 3 months. I will have been eating vegetables for 3 months. This will be your future perfect continuous tense in positive form. This is all about positive sentence. Now let's discuss about some negative sentence, students. I will not have been eating vegetables for 3 months. I will not have been eating vegetables for 3 months. Alright. So this is all about your negative sentence in future perfect continuous tenses. If you talk about the question form in future perfect continuous tenses, students, simply it will start with will. Subject will come after the helping verb. Will you have been eating vegetables for 3 months? The question will be framed like this. Will you have been eating vegetables for 3 months? Will question form हो गया. You have been eating perfect continuous form हो गया. And for 3 months question mark. So it is telling you about the question form in future perfect continuous tenses. So this is all about your perfect continuous. मतलब एक्शन कंप्लीट भी होगी और कुछ टाइम तक कंटिन्यू भी रहेगी. तो दोनों चीजें आ गई कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेंसेस पार्ट, स्टूडेंट्स. लेट्स जस्ट रिकॉल इट वंस अगेन. Tenses we have studied today, 3 types of tenses, past, present and future tenses. Then we studied about 3 simple tenses, past, present and future with the help of an example. After that we people have studied about simple present tense, या यूँ कह लो कि सारे simple tenses with the help of an example, with the help of a table. Then simple past, simple present, simple future. After this we people have studied about continuous tenses, present continuous, past continuous and future continuous tenses with the help of examples and with the help of whole format. Now then we people have studied about the perfect tenses, the present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. ठीक है. After this we people have moved on to the perfect continuous tenses, and then we have studied about the present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tenses. So this is all about your tenses, students. So students, with this we came to an end with this the session. If you understood the video, please do like, subscribe and hit the bell button of Motion. Thank you and have a nice day.